Hi, hello, good evening, everyone. This is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel. कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? Hi, hello everyone. Hi, Tanu. Just 1 second, मैं light on कर लेता हूँ. How's the preparation going, guys? I hope तैयारी अच्छा है. भाई अब थोड़ा सा मूव ऑन कर लीजिए लैंग्वेज से, थोड़ा आगे बढ़िए. Focus on literature. I was sitting and reading your comments थोड़ा बहुत बैठ के, although I was busy. बट जस्ट 5 मिनट पहले मैं आया एंड देन अभी भी आप लोगों का लैंग्वेज ही डिस्कशन चल रहा है. नाउ गेट ओवर इट. आई एम वेरी फाइन, थैंक यू सो मच. औरको बैनर्जी सर, आंसर राइटिंग के लिए कुछ बता दीजिए. आंसर राइटिंग के लिए बेटा वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, एंड जो Q&A का लाइव लिया था उसमें कुकी लेडी का आंसर कैसे लिखा हुआ था ऑलरेडी बता दिया है. पता नहीं, आधे से ज्यादा बच्चे बोलते हैं कि भाई एआई लिख रहा है, एआई लिख रहा है. शायद आपको अच्छे से ग्रूमिंग नहीं मिली है. हम लोग यहाँ पे अपने बच्चों को बहुत अच्छे से ग्रूम करते हैं, हमें एआई की जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है. चलो फास्टली, समवन इज सेइंग एकदम फास्टली. सुनील सिंह, चलो लेट्स फास्टली गेट इनटू इट. ऑल द बेस्ट. आई होप आपका गिव रीजन अच्छा जाए मैकबेथ का. चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स क्विकली डिग इनटू द गिव रीजंस फॉर मैकबेथ. जस्ट अ सेकंड. आई होप इट इज क्लियरली विजिबल. I hope it is clearly visible. Start करें. We have taken up five give reasons each, and जो important होगा वो आपको बता दिया जाएगा अभी. ठीक है. चलिए स्टार्ट करें. No predictions. Please don't request for predictions. Don't ask me to gamble and all. मेरे पास का नहीं है. Now you will write give reasons as briefly as possible. जितना हो सकेगा आप एकदम ब्रीफ में इसका जवाब देंगे. ठीक है. स्टार्ट करें. चलिए. Banquo's opening soliloquy, where he admits he fears Macbeth played most foully for the crown, is significant because मैं आपको कीवर्ड फॉर्मेट में ही आंसर दूंगा. रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस कैन बी framed as per your own understanding. Now, please remember that in literature, we do not give very much importance to sentence construction. Rather, what matters is that whether you have understood the concept or not, and if you are able to give textual evidence alongside your understanding, we award you full marks for that. हमें लैंग्वेज की तरह आंसर्स यहाँ पे क्रिएटिविटी नहीं दिखानी है आपको बहुत ज्यादा. ऑल्दो इफ यू कैन बी अ लिटिल प्लेफुल विथ योर लिंगुअल चल जाता है, बट अगर आपने समझा भी है अच्छे से एंड टेक्सचुअली एविडेंस देते हुए आप उसको जस्टिफाई कर पाते हो, यू आर अवॉर्डेड फुल मार्क्स इन लिटरेचर. ठीक है. चलिए. बैंकोस ओपनिंग सोलिलोकी, प्लीज ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है. When this particular scene opens, it opens with Banquo's soliloquy where he admits he fears Macbeth played us most foully for the crown. It is significant. Significant का मतलब it is important.
क्यों इंपॉर्टेंट है बैंकों का ये soliloquy? Because it confirms his suspicions. Why? Because Banco was the one who was there when the weird sisters prophesied for Macbeth that he would become the Thane of Cawdor alongside King as well. Thane of Glamis he already was. By Sinel, yani Macbeth के father का death, he already was the Thane of Glamis, and then he would inherit the Thane of Cawdor title alongside becoming king hereafter. And therefore he suspects is your keyword, suspicion. ठीक है? Banco feels suspicious of Macbeth having played foully for attaining the title by unfair means or by wrong means. Is that clear? Stop asking all these questions. Please focus on what is being taught. पहले पढ़ाई कर लीजिए, फिर आपके डाउट्स को उठाया जाएगा. बिना डांटे कोई काम ही नहीं होता है. Next one. Macbeth's to be thus is nothing but to be safely thus reveals his internal state. Because what is the meaning of this line, to be thus nothing but to be safely thus? Means to attain all those things which we desire, and if we are not able to sustain it further or preserve it further, it is futile. So this speech is indicating onto futility, right? Futility of all those titles, all those ranks which he has achieved. It reveals his internal state. Kaisa internal state? Feared internal state, right? He is feared or he is petrified. Why is he petrified? Because of the Banco's lineage prophecy. आपको समझ आ रहा है कैसे डाइसेक्ट करना है, कैसे चीजों को तोड़ना है और अपने सोल्यूशन पे पहुंचना है. He fears that Banco too had been prophesied with that his offspring, his children, will bear the royal lineage of Scotland. Insecurity, feared, petrified, paranoid, disturbed frame of mind, all these are your plausible keywords. Please use it in your answer. आपको समझ आ रहा है ना मैं कैसे डाइसेक्ट करता हूं, चीजों को तोड़ता हूं? आपको समझ आ रहा है ना? दैट इज हाउ एनी सब्जेक्ट इज टू बी स्टडीड. आपको उसका पोस्टमार्टम करना पड़ता है, उसमें घुसना पड़ता है. यू हैव टू ब्रेक थ्रू दैट सब्जेक्ट so that you understand the actual meaning कि वो क्या कन्वे करना चाह रहा है. ठीक है? नेक्स्ट वन. Macbeth chooses to remind the murderers. फोकस करो. Remind the murderers. याद करो of their own personal grievances. What is the meaning of grievances? That they had been dealt with hypocrisy. They had been dealt with hypocrisy. By whom? Against Banco. Because why is Macbeth making it a point to remind the murderers that it was Banco who in the times past had dealt you with a hand accursed? ठीक है? Why does he do so? In an attempt क्या करने के लिए? Because he wants to instigate the murderers to carry out the act which Macbeth has planned. Which act? The act of killing Banco and Fleance, so that he can surpass or overthrow the prophecy. Instigate, manipulate. Try not writing the word gaslight. Gaslight is very casual English. Stick to instigate or manipulate. ठीक है? Tinu Mariam, I have asked you a doubt on Instagram and you did not reply. I haven't opened my Instagram, dear. कितने दिन से मैंने इंस्टा ठीक से खोला भी नहीं है.
सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही है, यहां पे आप इंस्टाग्राम का बात कर रहे हो। यस, प्रोवोक भी आप बोल सकते हो। You can also say provoke. He tries to provoke the murderers. All are your plausible keywords. Next one. The comparison Macbeth draws between men and different breeds of dog. He compares, he basically gives an analogy, right? Macbeth एक analogy देता है. What is the meaning of analogy? Analogy itself means comparison. Macbeth tries to draw an analogy of different categories of dogs with that of men. Why? It is a manipulative tactic. It is a strategic tool because why? Why is it a strategic tool? To challenge, or question their manhood, right? The purpose is to question their masculinity, and by doing so, he feels that he might gain their resolve. Resolve means their agreement in killing Banco and Fleance. Yes, to provoke their ego by challenging their capabilities. ठीक है? Next one. Macbeth's fear of Banco's royalty of nature highlights his own insecurity because important question. Macbeth's fear of Banco's royalty of nature highlights his own security because आंसर कैसे बनाए? पढ़ाई करके। सनातनी, इतना अच्छा नाम है आपका सनातनी, लेकिन आप अपने धर्म को कैसे आप भूल गए? क्या होगा इसका? मैकबेथ्स फियर ऑफ बैंकोस रॉयल्टी ऑफ नेचर हाइलाइट्स। आप लोग क्वेश्चन नहीं समझते हो, ये उसका खुद का इनसिक्योरिटी बता रहा है। क्यों? वाई? बिकॉज मैकबेथ acknowledges Banco's natural wisdom, which he once possessed, यानी मैकबेथ में खुद था वो चीज, and which he once possessed, and he gave up to fulfill his own vaulting ambition. वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो सेम क्वालिटी जो मैकबेथ में था, he was valiant, he was noble, he was honest, and rather he was tied to the throne. He gave all those qualities up to fulfill his own vaulting ambition. ठीक है? चले आगे बढ़े. Next one. Coming to scene 2. Lady Macbeth's private admission that knots had all spent. यानी private admission का मतलब हो गया when she is all alone. At that time, she reveals her disturbed frame of mind that nothing is that we gain, but everything that we lost, we spent. Shows a shift. Shift समझ रहे हो? Change. Shows a shift, that is change in her character. Because why? Why is it showing a shift in her character? Because it reveals her
It reveals her disillusionment and unhappiness which has accompanied with the royal throne. Initially, she thought that she would feel fulfilled by becoming the Queen of Scotland, but then now she feels all disillusion and unhappiness after attaining the royal position. However, she finds no peace, and that's why she says, not had all spent. Rather, she stands in a sharp contrast to her earlier role where she was more assertive, she was more bold, she was more manipulative. ठीक है? Very good, very good. Guild नहीं बेटा, guilt. ओजस, it's not guild, it's guilt. Chalo, next one. Macbeth's use of the metaphor, scotched the snake, not killed it, describes his political situation. एंड आई थिंक बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन भी होता है कि ये स्कॉच द स्नेक नॉट किल्ड इट, ये जो स्नेक का इमेजरी बन रहा है ये एक्चुअली किससे एसोसिएटेड बन रहा है. दिस इज अ रेफरेंस बीइंग मेड टू डंकन्स रेजिसाइड. ठीक है, इट इज डंकन्स रेजिसाइड. व्हाई? क्योंकि आप खुद सोचिए कब बोला गया है. दिस हैज बीन अटर्ड, द स्कॉच द स्नेक नॉट किल्ड इट हैज बीन अटर्ड इन एक्ट 3 सीन 2. And when this line was spoken, before that, they were talking about their past crimes, that is Duncan's murder. This is not a reference to Banco. They are talking about the enterprise or the potential threats which needs to be eliminated. So half of the enterprise is accomplished by committing Duncan's regicide. Another half is yet to be done because the prophecy in Banco's case still holds true. जब तक बैंको एंड फ्लियांस, स्पेशली फ्लियांस, बैंको इज स्टिल सेकेंडरी, फ्लियांस इज प्राइमरी. सो एज लॉन्ग एज फ्लियांस इज अलाइव, द प्रोफेसी फॉर बैंकोस लीनिएज स्टैंड्स फर्म एंड दैट नीड्स टू बी एलिमिनेटेड. उसके लिए बोला गया है स्कॉच द स्नेक नॉट किल्ड इट डिस्क्राइब्स हिज पॉलिटिकल सिचुएशन. बिकॉज अब सोच के आंसर दीजिए क्या होगा. मैंने ऑलरेडी आपको आंसर बता ही दिया. टेक्निकली वही आंसर होगा. It uses the metaphor to describe his political situation because as long as Fleance is alive, the potential threat remains intact and that needs to be eliminated. ठीक है? His throne is insecure. His position, his kingship is insecure as long as Fleance is alive. In other words, Banquo's offspring is alive. No. Yeah. Snake could be taken as Malcolm as well, potential threat. But at this particular point in time, he's not considering about Malcolm or Donalbain. He's not considering about Malcolm and Donalbain. अगर आपको बताया गया है कि Malcolm and Donalbain है तो वो right नहीं है. Rather, it's an umbrella term which is describing Duncan's murder. यानी किंग बनने के लिए डंकन को मारना जरूरी था, उसको मार दिया, मैकबेथ राजा बन गया. अब आधा थ्रेट जो है वो खुला घूम रहा है विच इज बैंकोस प्रोफेसी. ठीक है, दैट नीड्स टू बी एलिमिनेटेड. हाँ, so both are a potential threat, Banco and Fleance. चलो next one. The shift in the power dynamic. Power dynamic का मतलब आपको पता है ना, role reversal. The shift in the power dynamic, that is role reversal, where Macbeth tells his wife to be innocent of the knowledge of his plan is crucial. Crucial यानी is important. Question को समझना सीखो. क्यों ये role reversal important है? किस चीज पे हाईलाइट हो रहा है? पहले लेडी मैकबेथ डोमिनेट करती थी, मैकबेथ सुनता था. अब वो लेडी मैकबेथ को पूरा ओब्लिवियन में डाल दिया है. You can use this word in your answer. Lady Macbeth is oblivious. What is the meaning of oblivious? Completely ignorant of what Macbeth is onto.
Why Macbeth has deliberately done this? First thing first, please understand the question. Guys, hello. Guys, calm down. 1 second. Understand the question. The role reversal, that is shift in the power dynamic, is crucial. क्यों? ये क्या showcase कर रहा है? ये क्या portray कर रहा है? What is it portraying? I would say it is portraying fractured, या आप distant भी बोल सकते हो. Their fractured, distant, or their stained relationship, where Macbeth wants to become assertive. He wants to become assertive and work independently to achieve his desires. He no longer requires Lady Macbeth's support. And this marks the beginning of their isolation. They both will meet their destined doom in separation and in isolation. ठीक है? चलो, next one. Macbeth's invocation. You know what is the meaning of invocation? Invocation क्या होता है? Invitation. He invites. Macbeth's invocation of sealing night to scarf up the tender eye of the pitiful day mirrors. Mirrors यानी same. It goes parallel. ठीक है? Mirrors same Lady Macbeth's earlier prayers, because अरे आप लोग क्वेश्चन तो समझो. यहाँ ये नहीं बोला है कि मैकबेथ, व्हाई इज मैकबेथ इनवाइटिंग द डार्क इमेजरी और द डार्कनेस टू कम एंड कवर अप द डे लाइट. दैट इज डिफरेंट. क्वेश्चन का नीड तो समझो. इट मिरर्स, it appears same as Lady Macbeth's earlier prayers, where she was also invoking the darkness to come and make her less of a woman. It mirrors. This is an alignment of Macbeth, just like Lady Macbeth in the previous act, where she had invoked the darkness to come and unsex her and make less of a woman to her, so that she could carry out the heinous act of regicide, or rather she could press upon Macbeth to carry out Duncan's murder. So he is invoking that same darkness to come and give him strength and might to carry out Banquo's murder. ठीक है? So in terms of evil deeds, they both are aligned. Alignment समझते हो? वो लोग दोनों कड़ियों की तरह जुड़े हुए हैं एक दूसरे से. मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा बिफोर आई प्रोसीड. गाइस, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग. आप अपने, अगर आप जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो, इफ यू वांट टू डू समथिंग गुड इन लाइफ, after this board examination, you will advise your juniors to study English throughout the year. If you are a human being, a kind human being, you will tell your juniors not to ignore the subject. Otherwise, the subject is going to ignore the other juniors when they go to class 12. ठीक है? ये जो आप बोलते हैं ना, कुक हो गया है पेपर, उनका भी कुक हो जाएगा. स्टार्टिंग से पढ़ाई करना होता है. चलो, Macbeth's claim that his mind is full of scorpion. His mind is full of scorpion, which is symbolic of mind being racked. Racked मतलब समझते हो? His mind is completely tortured, or it is paranoid. His mind is paranoid, racked, tortured, serves as a vivid. Vivid का मतलब होता है detailed image of his mental decay. Because क्यों? Why he is choosing the words full of scorpion is my mind to express his mental decay. Why?
नो यू विल नॉट लीव मेडिसिन बैग तनीषा, आप कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे, आप सब कुछ पढ़ के जाएंगे, ठीक है? वाई? बिकॉज बैंकोस part of prophecy is making him insecure and is stinging. You know what is the meaning of stinging? Stinge करने का मतलब क्या होता है? Paining, stinging his mind. ठीक है? Because Banco's part of prophecy is making him insecure, making him dwell, and is stinging his mind. Chalo, let's go ahead. Moving to scene 3. The unexpected arrival of the third murderer in the third scene of Act 3 to join the original two reveals a significant shift in Macbeth's psychological state. Because, socho, anonymously, without any information, he just sends for the third murderer. Why? Very good, very good. Just a guy. Good answer. It reveals a psychological agitation. Fine. Out of psychological agitation and his mistrust, out of his psychological agitation and his mistrust, because of his psychological agitation and his mistrust, he sends for the third murderer. ठीक है? Owing to his psychological agitation and his mistrust, he sends for the third murderer without any prior information. He trusts nobody. Yes, conjunct titan. If you write in simple answer, you will get marks. See dear, I am a teacher. I am bound to use good vocabulary. हम नहीं यूज करेगा तो कौन यूज करेगा? एंड आपको सीखना भी चाहिए, जरूरी है, ठीक है? इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट जिसको पढ़ना जरूरी है उसी वे में, द वे इट इज टू बी स्टडीड, हिंदी में नहीं. चलिए, नेक्स्ट वन. द फर्स्ट मर्डरर्स ऑब्जर्वेशन दैट द वेस्ट yet glimmers with some streaks of the day serves a deeper symbolic purpose in the play. Motif, motif का मतलब हुआ imagery. Motif means imagery of light and darkness. Because who is light symbolically over here? That is symbolic of Banco's goodness, in other words, his royalty, right? And who is dark over here? It is Macbeth, who has evil desires, या जिसको आप vaulting ambition भी बोल सकते हो, ठीक है? His overwhelming ambition. And इसका पर्पस क्या हुआ? इसका पर्पस हुआ to draw the contrast. So this light and dark imagery, it draws a sharp contrast between Banco's royalty in his nature, his goodness, and Macbeth's evil desires, that is his vaulting ambition. मजा आ रहा है? समझ आ रहा है कैसे आपको तोड़ना है, कैसे आपको पोस्टमार्टम करना है?
हिंदी में पढ़ा दो, हिंदी में पढ़ा दो, हिंदी में पढ़ा दो। तो एक काम करिए ना, आप हिंदी सब्जेक्ट ही पढ़ लीजिए। क्यों आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं? वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश? इरिटेटिंग लाइक एनीथिंग। चलो, the act of striking out the light at the precise moment, exact moment of the murder is profoundly ironical. Why is it ironical? It is deeply ironical in the context of Macbeth's earlier desire. Because सोचो, क्यों आयरॉनिकल है? क्यों आयरॉनिकल है? थिंक। एक काम करते हैं, डिस्कस करते हैं रादर देन राइटिंग, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। व्हाई इज इट आयरॉनिकल? थिंक। मैकबेथ हैड इन्वोक्ड द डार्कनेस टू कम एंड कंसील द स्टार्स, राइट? कि मैकबेथ आए, सॉरी, डार्कनेस आए और स्टार्स को हाइड कर दे। He was invoking the murky sky to come and hide the stars. So Macbeth thought that owing to that darkness, it will hide his evil desires, his evil plan, which is to be carried out, right? However, it is that same darkness which paved the path for Fleance to escape, and that is why it is deeply ironic. So the darkness which Macbeth perceived that it will help him to get rid of Banquo and Fleance actually became the reason which led to Fleance's escape from that murder scene. ठीक है? That is why it is deeply ironic. चलो, Banquo's final command to Fleance, "Fly thou mayest revenge," functions as a major turning point. फोकस करिए कीवर्ड पे, टर्निंग पॉइंट। अच्छा, अब जो जो चीज को मैं ऐसे क्लाउड अप कर रहा हूं ना, आपको भी अपने एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में ऐसे अंडरलाइन करना है। सी, हर एक चीज कोई काम का नहीं है। मेन यहाँ पे कुछ ऐसे कीवर्ड होंगे, जैसे प्रोफाउंडली आयरॉनिक कीवर्ड हो गया, टर्निंग पॉइंट कीवर्ड हो गया, जिसके बेसिस पे आपका आंसर बनेगा। ये सब तो कॉन्टेक्स्ट है, बाकी सारी चीजें तो कॉन्टेक्स्ट है। क्वेश्चन है टर्निंग पॉइंट, क्वेश्चन है प्रोफाउंडली आयरॉनिक, उसके बेसिस पे आंसर बनना है। सो थिंक अकॉर्डिंगली, ठीक है? सो व्हेन बैंको इज गिविंग a final command to Fleance that fly so that you may revenge my death is a turning point in the play's dramatic structure. Why? Because socho, it allows the part of the witch's prophecy to remain true, because Fleance is Banquo's offspring, and Fleance's escape makes sure that the prophecy made for Banquo still remains intact. ठीक है? चलिए आगे बढ़े। The second murderer concludes that they have lost best half of their affair despite successfully killing Banquo, because textual evidence देना है, दीजिए। Because to Macbeth, Banquo's murder, to Macbeth, Banquo's murder was secondary. Primary was Fleance's murder to overthrow the part of witch's prophecy. And that is why they say that they are going to get good bash from Macbeth, because they have only accomplished their half mission. Half of the deed remains unfulfilled or unaccomplished. ठीक है? Primary was Fleance's murder and secondary was Banquo's murder. Got it? चलिए आगे बढ़े सीन 4 पे। Act 3, Scene 4, Macbeth's reaction to blood on the murderer's face. चेहरे पे खून लगा है, blood on
thy face वो बोलता है, right? On thy face, being bankos rather than fleances shows his fixation on the prophecy because because he was haunted by the fact, although he was satisfied that Banco has been successfully ambushed, has been murdered, but it was Fleance, whose death was a necessity to Macbeth, has fled, and it makes him feel horrified at the thought that still it allows the witch's prophecy to remain true. ठीक है? Next one. The ghost of the Banquo sitting in Macbeth's place is a visual representation of the witch's prophecy because it is a visual representation of the witch's prophecy because सोचो बैंको ठीक वहां आके बैठा है जहां मैकबेथ का राजगद्दी है where it is his throne or rather it is his seat. क्यों बैंको और कोई सीट पे नहीं बैठा जाके मैकबेथ के ही सीट पे बैठता है? वाई? बैंकोज घोस्ट यहां पे बैंको का जो घोस्ट है इट स्टैंड्स एज अ रिमाइंडर. ठीक है, दैट इज योर कीवर्ड. बैंकोज घोस्ट सिटिंग ऑन मैकबेथ्स सीट स्टैंड्स एज अ रिमाइंडर दैट बैंकोज ऑफस्प्रिंग शैल इनहेरिट द थ्रोन ऑफ स्कॉटलैंड. कि उसी के बच्चे राजा बनेंगे नो मैटर हाउ हार्ड मैकबेथ ट्राइज. Yes, it is Banquo's descendant and not Macbeth's who will inherit the throne of Scotland. It stands as a reminder of the prophecy. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Lady Macbeth's attempt to dismiss Macbeth's vision as customary, to which she says that it is just a momentary fit. She dismisses it by saying, calling it as a momentary fit. Infirmity is a desperate attempt to maintain social order because, and rather, it is a desperate attempt. कीवर्ड क्या आ जाएगा? सोचिए. Macbeth's breakdown, and that too public breakdown, might, what is your keyword? Expose their crimes, right? Macbeth's public breakdown in front of all the aristocrats and the noble might expose their crimes. आप लोग पता नहीं क्वेश्चन का नीड ही नहीं समझ पा रहा, मेरे को लग रहा है. Expose, 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 expose. That is the keyword. चलो next one. Macbeth's realization that blood will have blood. Blood will have blood. Marks a point of no return for his conscience because he is incapable of maintaining his social calm. Macbeth is incapable. ठीक है, Macbeth is incapable of maintaining his social calm because
No, no return for his conscience, because he realizes that violence will bring on. What is the meaning of bring on? It's a phrasal verb, हमने सीखा था, जिसका मतलब होता है breed, right? Breeding. Violence will bring on more violence to carry on a vicious circle. You know what is the meaning of vicious circle? Vicious circle यानी एक लूप जो चलते रहता है, लाइक एक वायलेंस से और वायलेंस, एक वायलेंस से और वायलेंस, और वायलेंस, और वायलेंस, और वायलेंस. So it will bring on more violence to carry on a vicious circle of vengeance या revenge, आप जो भी बोलो, ठीक है. It is going to bring on violence. Once he has committed violence, it is going to bring on more violence to continue a vicious circle of revenge, which Macbeth will not be able to prevent. ठीक है, which Macbeth will not be able to prevent. Yes, his deeds of bloodshedding is going to make way for more bloodshedding. Next one, Macbeth's decision to seek out the witches again at the end of the scene indicates his total reliance on the supernatural, because he has lost his ability to maintain his calm and racked brain. ठीक है, racked means tortured brain. Lost his ability to maintain his calm and racked brain. Yeah, also you can say to seek reassurances. ठीक है, to seek reassurances because he has lost his ability to maintain his calm and racked brain. चलिए, next scene. Scene 5. Hecate's anger at the weird sisters for dealing with Macbeth in riddles and affairs of death suggests that Macbeth is not a true servant of evil. क्या बुलाती है उसको? What does Hecate call Macbeth as? She addresses Macbeth as, very good, as a wayward son who loves his own whims and desires, and he is selfish. He is selfish to his own means. ठीक है, he is self-centered, wrathful, selfish, wayward son. हाँ, प्रिज्म एंड रैप्सडी ऑलरेडी पढ़ा दिए, आप जाके लाइव चेकआउट कर सकते हो. नेक्स्ट वन, Hecate's plan to use artificial sprites. Sprites is spirits. She plans to use illusions, artificial spirits to draw. What is the meaning of draw? Lure, trap. To lure or trap Macbeth onto his confusion reveals the manipulative nature of the witches, because it shows that witches are manipulative in their nature.
Very good. Because they intend, थक गया हूं, आंसर नहीं लिखना है. Because they intend to deceive, trick Macbeth by showing him deceiving apparitions and illusion, and by fueling his insecurity. As Hecate said, security is mortal's chiefest enemy, which will seal 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 his tragic end. ठीक है. Third one, the statement that security is mortal's chiefest enemy serves as a foreshadowing. What is the meaning of foreshadowing? Foreshadowing means indication. Foreshadowing is indication of Macbeth's downfall, because the apparitions which will be conjured is going to, the apparitions जो conjure किया जाएगा वो क्या करेगा, is going to fuel Macbeth's sense of insecurity and lead to his further downfall. ठीक है. It will make Macbeth believe that he is invincible. He will completely rely on witches' equivocation, and that will mark his tragic end. Next one. This scene is more rhythmic. This scene's more rhythmic, musical tone compared to the rest of the play serves to the distant the witches from the human world, because because they are the harbingers, creators, doers of evil, and that use of musicality in this particular scene uplifts that gory atmosphere and eerie mood of the play. ठीक है. Yes, it uplifts the eerie atmosphere of the play. Fifth one, Hecate's involvement, that the forces of darkness are now taking a direct interest in Macbeth's destruction, because Hecate's involvement suggests that forces of darkness are taking a direct interest because in Macbeth's downfall, because Macbeth has Macbeth has stepped into evil doing so far that it makes Hecate's appearance a necessity to come and personally deal with Macbeth. He has embraced evil to such an extent, and he has stepped so far in bloodshedding and violence and evil doings that Hecate has to come herself to deal with Macbeth and right his fate. चले आगे बढ़े. Scene 6. Now this is Lennox and Lordka. Lennox's heavy use of sarcasm while discussing the pity Macbeth felt for Duncan serves to show that, sochiye, Lennox's words drips in sarcasm. His words are laced with sarcasm. Discussing the pity Macbeth felt for Duncan serves to show that he is suspicious of Macbeth. ठीक है? Serves to show that he is suspicious of Macbeth, and this is
an indication of all the Scottish nobles now failing to actually believe what Macbeth had said earlier, that they do not believe Macbeth anymore or any further. The Lords report that Macduff has gone to English court to seek help from King Edward underscores the theme of divine right, because it stands in a sharp contrast, right? It stands in a sharp contrast where Edward's healing properties are contrasted with that of Macbeth's illegitimacy and his tyranny. To build a sharp contrast, Ibrahim, if you have solved my sample paper beta, that is more than enough. आपने कर लिया. Important parts जो है मैं कल आके YouTube पे वीडियो डाल दूंगा. Which are the key areas which you need to study once again? So please right now focus on give reasons. आइए थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं ना. Next one, the reference to Macbeth as a tyrant. Lennox and Lord, they label Macbeth as a tyrant, marks a change in the public reputation, because Macbeth has lost what? Think, क्या खोया है Macbeth ने? He has lost the honor. No, 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 no. जब aristocrats उसको tyrant बुला रहे हैं, so this is an indication of Macbeth having lost his respect in the nobles eyes. ठीक है, मैकबेथ ने अपनी इज्जत, अपनी रिस्पेक्ट को गवा दिया है. He has lost his respect in the nobles eyes. He has lost the honor. Respect है, honor है, same चीज आप बोल सकते हो. ठीक है, he has lost the respect and honor in the nobles eyes. Next one, the description of Scotland as a suffering country under a hand accursed creates a sharp contrast to the earlier description of the land, because the description of Scotland as a suffering country under a hand accursed creates a sharp contrast to the earlier description of the land. Which land is being spoken about? The land of England, which is ruled over by who? By Edward. क्यों ये stand करता है as a sharp contrast? Because it is Scotland which sickens under Macbeth's tyranny, and it is Edward who has healing property as a ruler. Yeah, you can also further interpret it as Scotland under Duncan's reign. How country was prosperous when Duncan used to rule it. दोनों जा सकता है. ठीक है. Both of the answers are plausible. चलो, next one, the mention of the holy Macduff. Macduff को holy कहा गया है. Preparing for the war indicates that the conflict has shifted from a civil war to a moral crusade, because
No, his family has not been assassinated up till now. सबसे पहले तो क्रूसेड का मतलब समझो क्या होता है. आपको शायद क्रूसेड नहीं पता है, हिंदी में बताओ. क्रूसेड मीन्स, महाभारत देखी होगी ना आपने. यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रूसेड. महाभारत देखी है आपने. क्रूसेड इज धर्म युद्ध. Why holy Macduff, who has gone for the preparations of war, rather he has gone to England to persuade Malcolm to bring forth an army to depose Macbeth. This shifts this particular civil war into a moral crusade because क्यों सोचो, ये धर्म युद्ध क्यों है, ये sort of धर्म युद्ध क्यों है. Why? Because it is an attempt to restore back the lost peace and prosperity into their country. ठीक है. Because Macduff's attempt is basically क्या बोल रहा हूं मैं, रुको. Macduff having gone to England is basically an attempt on his part to restore back the lost peace and prosperity into their country which has been lost. समझ आया. चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं. The ingredients in the witch's cauldron, Act 4, Scene 1. The eye of a newt, toe of a frog serve to visually represent the chaos Macbeth has unleashed. It visually represents the chaos which Macbeth himself has unleashed. Because they represent the unnaturalness which has come along with Macbeth's immoral reign. And when I say unnaturalness, what is this meaning of unnaturalness? It is three things: social, political, and moral. कलेक्टिव वर्ड हो गए तीनों के, सोशल, पॉलिटिकल, मॉरल, chaos. ठीक है. So when I'm saying unnaturalness, it is an umbrella term for social chaos, political chaos and moral chaos. The uproar, chaos को आप uproar भी बोल सकते हो, which has accompanied through Macbeth's immoral reign. Reign means his immoral rule. Is that clear? I want to ask you something. 1 second before we proceed. मैं देख रहा हूं कि आपको शायद अच्छा नहीं लग रहा है. Are you finding these questions difficult? Are you finding these questions difficult? आपको अगर डीमोटिवेटिंग लग रहा है, आप खुद से पढ़ना चाहोगे? मैं इसको अपने ऐप के स्टडी मटेरियल सेक्शन में डाल दूं? नहीं, आई हैव टू केटर टू एवरीवन ना. आई हैव टू केटर टू एवरीवन. अगर आपको डीमोटिवेटिंग लग रहा है, देन यू टेल मी.
मैं इसको आपके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में डाल देता हूं, आप खुद से पढ़ाई कर लीजिए. सी आई डोंट वांट टू ऐड मोर टू योर हॉरर. आपने लैंग्वेज पेपर देखा ना? इन माय ओपिनियन लैंग्वेज पेपर वाज वेरी इजी गाइस. लास्ट ईयर का अनसीन पैसेज वाज मच मोर टफ. इस बार के जो वोकैबुलरी थे या ग्रामर सेक्शन था, इट वाज क्वाइट इजी देन दैट ऑफ लास्ट ईयर इन माय ओपिनियन. हो सकता है आपका पर्सपेक्टिव अलग हो, क्योंकि हम लोग जैसा ग्रिलिंग करते हैं हमारे ओपिनियंस डाइवर्जेंट हो सकते हैं. अगर आपको लग रहा है ये टफ है, कि मुझे मुश्किल हो रहा है, आप मेरे को बताओ. मैं अभी इसको यहीं छोड़ दे रहा हूं. मैं आंसर की और ये दोनों अपने ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में डाल दे रहा हूं. आप आराम से जाके खुद से पढ़ लो. एंड अभी तक मैंने जैसे आपको डाइसेक्शन करना सिखाया है कि कैसे तोड़ना है, हाउ यू हैव टू ब्रेक थिंग्स डाउन. अभी आप देखा मैंने कैसे आंसर निकाला. बिकॉज दे रिप्रेजेंट द अननेचुरलनेस विच हैज कम अलोंग विथ मैकबेथ्स इमोरल रेन. इसको मैंने तोड़ा, अननेचुरलनेस को. तो आपको ये करना आना चाहिए क्लास 12th में. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट HOTS, जब हम लोग बात कर रहे हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का, या जब हम लोग कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन का बात करें, क्या होते हैं कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन? यही तो होता है कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन. दिस इज हाउ कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस आर मेड. मेरे को बहुत खराब लग रहा है आप लोगों को देख के. ऑल्दो आई वांट टू हेल्प यू, बट मैं क्या करूं आप बताइए. साल भर पढ़ने का होता है ना. चलो, पीपल आर सेइंग कि नहीं सर कंटिन्यू करिए, तो कंप्लीट करते हैं इसको. Second question. The first apparition's warning to beware Macduff. Beware Macduff is the only honest prophecy given. Because सोचो, think. ये एक ऐसा प्रोफेसी है जो कि एकदम ऑनेस्ट प्रोफेसी है. क्यों? Go back to class 11. Think. Who was the first one to suspect Macbeth? It was Macduff. When after he had killed Duncan, and then the entire information had been announced that king has been murdered, and Macbeth tried to justify that in my pious rage, in my righteous rage, I just killed the drunken guards. It was Macduff who was the first one who directly suspected, but then Lady Macbeth, not Macduff, sorry, Lady Macbeth, she fainted. She fainted, and the entire matter was just brushed off at that moment, right? Entire matter was just brushed off at that moment. So the first apparition warning is the only honest prophecy because it was Macduff. It was Macduff who was I would say, who was suspicious of Macbeth at the beginning, making him a potential threat. Making him a potential threat. ठीक है. Next one. The second apparition's assurance that none of a woman born shall harm him creates a false sense of invincibility. Because it fuels Macbeth's arrogance. It fuels Macbeth's arrogance. Class lau chu pachi aau chu. It fuels Macbeth's arrogance, making him feel shielded against any sort of potential threat. ठीक है.
It fuels Macbeth's arrogance, making him shielded against any sort of threat. The third apparition's promise regarding Burnham Wood is an ultimate, is a final equivocation. What is the meaning of equivocation? दो मुही बातें. Is an equivocation. Because it is a half-laced prophecy, it's a half-laced truth, which is going to come off as true as a military strategy, which will be provided by Malcolm later in the play. ठीक है? Although it seems impossible at this point in time that Burnham cannot move, but actually it is an equivocation on the fact that through military strategy or tactic, it will come off as true. Got it? Next one, fifth one. Macbeth's reaction to the line of 8 kings ending with Banco shows that his primary fear is not death, but किस चीज से वो ज्यादा डरता है? What is he afraid of? He is afraid of the crown turning into fruitless because it will be snatched from an unlineal hand, means from someone who does not belong to his own legacy or his own descendants. ठीक है? ठीक है? Got it? चलो, good one. Next, Act 4, Scene 2. Lady Macduff's assassination scene. Lady Macduff's frustration with her husband for leaving his family defenseless adds a layer of human tragedy. कैसे ये human tragedy पे add करा है? सोचिए. Think about the keyword like victims are who. यहाँ पे keyword जाएगा I से और CE पे खत्म होगा. Think क्या लगेगा? Why is it a human tragedy? Who are the victims? समझ आ गया? Victims are the innocent in the Scotland. Victims are the innocent in the Scotland who haven't done anything wrong and yet they are paying the price of Macbeth's tyranny. Got it? Who have no role to play in the political chaos which is brewing in Scotland. Next one. The witty dialogue between witty, humorous, light-hearted. The humorous, light-hearted, witty dialogue between Lady Macduff and her son provides a brief calm before the storm because textual evidence, Macbeth has already क्या कर लिया है? Macbeth has already got their assassination planned beforehand, right? So it is a calm before storm where all of a sudden violence is going to barge in through Macbeth's hired assassins and murderers, and they are going to unleash themselves onto innocent. Unleash मतलब समझते हो? They are just going to take down onto the innocent. Next one. The son's defense of his father. The son's defense of his father, even in his absence, highlights the theme of familial loyalty because
because it, yes, yes, to add to the sense of sympathy and pity, add to the element of sympathy and pity. At the same time, contrast how Macbeth has even betrayed his kith and kin. You know what is the meaning of kith and kin? To contrast that, Macbeth has betrayed, प्लीज इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए तो, kiths and kins. What is the meaning of kiths and kins? Close and loved ones. ठीक है, kith and kins, close and loved ones, near and dear ones. Yes. चले आगे बढ़े. Next one. The brutal on-stage murder of the son serves to shock the audience into realizing Macbeth's total loss of humanity. Shock the audience and make us realize about Macbeth's total loss of humanity because he is not committing any murder to preserve his safety or security. Rather, he is doing it out of impulse emotion. It echoes the words which was spoken in Act 4, Scene 1. The first ling of my hand will be the first, the first ling of my hand, of my mind will be the first ling of my hand. So whatever I think first, I am going to enact onto that immediately. ठीक है. चलिए, this scene is structurally important because it provides the audience with a direct motivation for Macduff's vengeance. What is the meaning of vengeance? Revenge. Because the scene is structurally important because it provides audience with a direct motivation for Macduff's vengeance. Because Macduff's family, Macduff's family's वर्ड नहीं बैठ रहा है. Macduff family's murder is a personal attack on the part of Macbeth. ठीक है. Direct motivation for revenge because Macduff's family's murder is a personal attack on the part of Macbeth. Yes, very good, Saurav Mandal. I really like your answer because the murder of his family personalizes his conflict with Macbeth. Good one. The line is nice, Mr. Mandal. चलिए, बस ये लास्ट सीन मैं करा रहा हूं, बाकी का और भी है. मैं इसको डाल दे रहा हूं ऐप पे, आप आराम से जाके बैठो और आंसर की भी लेके बैठ जाना. मैं आंसर की भी डाल दे रहा हूं. ठीक है. सो लेट्स फिनिश एक्ट 4 सीन 3. फिर आप खुद से भी जाके पढ़ने बैठ जाओ. Malcolm's lengthy confession of his vices. What is the meaning of vices? Negative traits, all the negative quality that he possesses. To Macduff serves as a test to Macduff's integrity because
राधे राधे राघव। नहीं नहीं बेटा, ये ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में चल जाएगा राजवीर, डोंट वरी। ठीक है, it will go into the app's free study material section, you can go and check it out. Prism and Rhapsody has already been done there. Prism and Rhapsody का आप लाइव डे 1 देखना Prism का है, डे 2 देखना Rhapsody का है। Prism का आपका फर्स्ट डे में लाइव में थोड़ा इंटरप्शन आ गया था, तो 2 पार्ट में है, एक 30 मिनट्स का कुछ वीडियो है, एक आपका 1 आवर 20 मिनट समथिंग लाइक दैट, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें सारे प्रोजेस स्टोरीज करा दिए गए, Rhapsody वाले में सारे Rhapsody के MCQs एंड गिव रीजंस दोनों करा दिए गए। ठीक है, शैलेंद्र शॉ इज सेइंग सर आप गारंटी दीजिए कि आप पास करवा देंगे। कैसे गारंटी दूं भाई, कैसे गारंटी दूं मैं? तू एक काम कर, तू मेरे को ले चल पेपर लिखने, तो मैं गारंटी देता हूं तेरे को कि 100 में 100 दिला दूंगा। चल तू मेरे को लेके चल, मैं तेरे को जो 10 मार्क वाला क्वेश्चन होता है उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आऊंगा, उसमें भी तुझे 10 में 10 मिलेगा। ठीक है, चलो ले चलो मेरे को। हाँ बेटा दीपिका अध्यानी, हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन। अच्छा हाँ, ये तो बताओ क्या होगा। Malcolm's lengthy confession of his negative trait to Macduff serves as a test to Macduff's integrity because he wants to test Macduff's true patriotism, whether he loves his country or not. ठीक है ठीक है, before he breaks into his plan of bringing the entire English army to Scotland to depose Macbeth. App's name is ARYAN tutorial if you are an Android user, and if you are an iOS user then you need to download Class Plus app and punch in PLYMMV। ठीक है, चलिए सेकंड वन। हाँ बेटा मेरे पेपर से हो जाएगा भाई, मैंने पेपर को बहुत मेहनत करके डिजाइन किया है, सारे टीचर्स से भी इवैल्यूएट करा लिया है, दे आर वेरी हैप्पी विद द पेपर। उसके बाद आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा आप क्या लिख के आओगे। अब पता चला आपको क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ में आया, तो उसमें मैं क्या करूंगा, आके मार लेना मुझे। अगर आपकी इंग्लिश खराब हुई, आप क्वेश्चन पढ़ के समझ ही नहीं पाया, तो हम क्या करेगा उसमें बताओ, हम क्या करें? हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन तो इंटरप्रेट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। Macduff's cry of Scotland, Scotland proves to Malcolm that his loyalty lies with the country, not just a leader. Macduff's cry, he shrieks out, oh Scotland, proves to Malcolm that his loyalty lies with the country, not just with the leader. Because who is he grieving for? किसके लिए रो रहा है? Who is he grieving for? He is grieving for the state, for the country. ठीक है, 100%. If you write any answer in key points format in simple English, you will get full marks. Don't worry. You don't have to use मेरे जैसा इतना भारी vocabulary, आता है तो इस्तेमाल करिए, नहीं आता है तो सिंपल लैंग्वेज में लिख के आइए। जस्ट मेक श्योर कि एग्जामिनर को समझ में आए कि आपने समझा है। आप जस्ट कहीं का पार्ट कहीं पे भी उठा के कुछ भी नहीं लिख दे रहे हो, उसमें फिर नंबर नहीं आता है। ठीक है, नो नो नो, पार्शियल कोटेशन। प्रगति प्लीज पार्शियल कोटेशन देने का कोशिश करिएगा प्लीज बेटा, पार्शियल कोटेशन, नॉट द एंटायर लाइन बट पार्शियल। Scotch the snake, not killed it. Fruitless crown, barren sceptre, restless ecstasy. ठीक है, what's done is done. Out, damn, spot, out. These are your partial quotation. Please make use of it. चलिए थर्ड वन, द डिस्क्रिप्शन ऑफ किंग एडवर्ड्स होली टच टू क्योर द इविल. आई होप यू ऑल नो दैट दिस इज अ फॉर्म ऑफ एन अल्सर, राइट? It is a form of an ulcer. A tuberculosis provides a direct foil. Foil का मतलब होता है contrast. It stands as a direct contrast
अब मेरे को नींद आ रहा है तो सारे स्पेलिंग उल्टे पलटे हो जा रहे हैं. अल्सर provides a direct foil contrast to Macbeth's cursed touch because भाई इंडिया में इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है. एक तो आधे से ज्यादा बच्चे आप लोग सारे डिल्यूजन में हैं. कैसा सवाल पूछ रहा है? एक रात पहले पढ़ के 80 आ जाएगा. आई एम स्पीचलेस. आई एम फ्लैबरगास्टेड. आई हैव नो वर्ड्स. कैसा मोटिवेशन चाहिए भाई आपको? और कौन दे रहा है आपको ऐसा मोटिवेशन? यूट्यूब पे है कुछ लोग जो बोलते हैं बस ये पढ़ लीजिए हो जाएगा. क्या भाई, ऐसा थोड़ी होता है. ऐसा कुछ नहीं होता है. पढ़ाई करना पड़ता है. फेक मोटिवेशन मत मांगिए मेरे से. Come back to the question. The description of King Edward's holy touch provides a direct contrast to Macbeth, foil to Macbeth, because Edward is a healer and Macbeth is a killer. कितना अच्छा लाइन निकला. Edward is a healer and Macbeth is a killer. Basically, is a disease who needs to be cured immediately. ठीक है. Edward is a healer and Macbeth is a killer who needs to be eliminated. Chalo. Oh, thank you so much, Shubh Agarwal. My sample papers were amazing. Yeah, I know. I myself am amazing, right? बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ. नहीं नहीं नहीं. मेहनत की है. जितना नॉलेज था सब सीखा है ओवर द एक्सपीरियंस. बहुत बहुत हार्डवर्क करके इसको बनाया है. कभी सोचा नहीं था कि आप लोगों का यूट्यूब में इतना प्यार मिलेगा. दिल से ग्रेटफुल, थैंकफुल. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव. आज अगर यहाँ पे खड़ा हूँ पढ़ा रहा हूँ, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स, तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट. नेवर थॉट कि यूट्यूब पे इतना इतना पॉपुलैरिटी, इतना प्यार, इतना लव मिल भी सकता है. आई वॉज वेरी हैप्पी विथ माई ऑफलाइन coaching, my students, my little world. But then it is my offline kids who pushed me to start with a YouTube channel. No, bhaiya, you should go online. A lot of people should see you, that how amazingly you teach and you leave an imprint. ठीक है. चलिए, बहुत इमोशनल बातें हो गई. Let's get to work. Ross's hesitation. Now, Ross, he enters this particular scene hesitatingly saying to Macduff that his family is well and is heartbreaking use of double meaning. He's making use of double meaning words in a heartbreaking manner. Why? Because he is incapable of breaking to Macduff that नहीं लगाऊंगा. He is incapable of breaking to Macduff how his family was brutally slaughtered. ठीक है. He is finding it difficulty, or he is not finding words to break it off to Macduff that how his family was murdered. प्लीज यूज अच्छे अच्छे एडजेक्टिव. जैसे आप देख रहे हो ना, क्या हो रहा था उसको? ही वॉज इनकेपेबल. क्या इनकेपेबल? बताने के लिए, ब्रेकिंग इट टू मैकडफ. नाउ इंस्टेड इफ आई से ही वॉज फाइंडिंग इट डिफिकल्टी टू टेल मैकडफ, अब मैंने अगर इसको लिख दिया इनकेपेबल ऑफ ब्रेकिंग टू मैकडफ, ब्रेकिंग टू मैकडफ इटसेल्फ कन्वेज कन्फाइड इन. एंड कन्फाइड इन करने का मतलब होता है बताना, टेलिंग. ऑटोमेटिकली आपका वोकैबुलरी एलिवेट हो गया, आपका एक्सप्रेशन स्टाइल एलिवेट हो गया, एंड दिस मेक्स योर आंसर स्टैंड आउट. ठीक है, थोड़ा सा इसको कोशिश करिए. बस 2 दिन और पढ़ना है.
आज की रात, कल और परसों सुबह बस आपका लिटरेचर पेपर कंप्लीट, पूरा मेहनत जी जान कर दो, एकदम 100 निकाल लो, 99 100 ले आओ, लैंग्वेज का जो गड़बड़ हो गया बैलेंस आउट हो जाएगा, यू आर ऑल सेट फॉर इंग्लिश। उसके बाद ठीक है, आपकी फील्डिंग सेट है उसके बाद, दैट इज व्हाट यू ऑल से, राइट? जेनजीज फील्डिंग सेट कर देंगे। चलिए, फिफ्थ वन, लास्ट गिव रीजन फॉर टुडे, देन आई एम वेरी टायर्ड, मैं साइन ऑफ करूंगा, इसको मैं डाल दूंगा अभी ऐप में, आप आराम से बैठ के इसको सॉल्व कर लीजिए। Malcolm's command to Macduff to dispute it, dispute का मतलब हो गया embrace, हालांकि dispute का मतलब होता है झगड़ा, बट यहां पे हो गया embrace का context, और to fight it like a man, और to endure it, endure का हिंदी मीनिंग क्या होता है? सहन करना, राइट? सहन करना, to fight it like a man, and Macduff's reply that he must feel it as a man as well, feel it as a man, redefines the play's concept of masculinity, because it redefines masculinity because true manhood is about acknowledging your own emotions, which Macbeth lacks, which Macbeth lacks when it comes to deciphering yani decoding his own emotions. He does not do it. He says that first link of my mind is the first link of my hand. जो मैं सोचूंगा पहले कर लूंगा, बाद में सोचूंगा, जो दिमाग में आएगा पहले कर लेते, बाद में सोचते हैं, बट रादर यहाँ पे he wants to feel that pain, he wants to feel that emotion, so he is giving that due importance to uh, uh, he is giving that due importance to his emotion. Macduff is giving that due importance to his emotion, where Macbeth does not, which portrays or showcases that Macbeth's manhood is actually hollow. It is hollow. ठीक है? कॉमर्स एंड इको इतना अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि आप मेरे को याद रखेंगे, ठीक है? कॉमर्स एंड इको इतना अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि आप मेरे को याद रखेंगे। आप खाली लिटरेचर अच्छे से करके आओ, अकाउंटेंसी अच्छे से कर लो, सिंस अकाउंट्स इज नॉट माय फोर्टे। आई एम जस्ट हियर फॉर अनदर 3 मिनट्स, 11:40 होगा और मैं बंद कर दूंगा ये लाइव को। आपको जो पूछना है आप पूछ लीजिए, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क प्लीज आस्क, एंड देन उसके बाद आई जस्ट साइन ऑफ, ठीक है? Sir, we have to write answer in a separate paragraph of 5 mark. Yes, my dear. क्योंकि 5 मार्क क्वेश्चन में आपके 2 पॉइंटर्स दिए रहेंगे, ए और बी। आप ए और बी लिख के मत आ जाइएगा, वो एक ही आंसर है, वो आपको लीड दिया हुआ है, प्रॉम्प्ट दिया है। सो पॉइंट ए के लिए 1 पैराग्राफ एंड पॉइंट बी के लिए पैराग्राफ 2, ठीक है? 2 पैराग्राफ में आपका 5 मार्क का आंसर बनेगा, टचिंग अपॉन द एरिया विच काउंसिल हैज ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन पेपर। And for even 10 marker question, I would advise you to at least write in 3 or 4 paragraph. Makes the answer look a bit decent. ठीक है? कोई भी कोटेशन होगा, कोई भी कोटेशन होगा, उसको प्लीज सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डालिएगा, सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा में। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना पेपर को 2.5 घंटा में कंप्लीट करके कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दीजिएगा। कल जब शाम में एक वीडियो आएगा 7 बजे, कल हम लाइव आएंगे, आपको CFQs कराएंगे, काउंसिल का कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन प्रॉपर्ली डाइसेक्ट करके क्या होगा आंसर, क्यों होगा, वो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एंड उसके बाद मैं आपको एक वीडियो बता दूंगा व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू बेयर इन माइंड व्हाइल गिविंग योर लिटरेचर का एग्जाम। कीवर्ड्स अंडरलाइन करना है, कितना देर में पेपर कंप्लीट करना है, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, किस क्वेश्चन को पहले करना है, वो सब हम लोग आराम से उसमें डाल देंगे, ठीक है?
द वर्ड लिमिट नाउ सी, मतलब वापस से एकदम कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज द वर्ड लिमिट फॉर अ 5 एंड अ 10 मार्कर आंसर, पता है मेरे मन में क्या आ रहा है? हे भगवान, पूरी रामायण खत्म हो गई, उसके बाद बोल रहे हैं हरण किसका हुआ था। रामायण कंप्लीट हो गया, ये वो बच्चा है कि पूरा फैमिली गॉसिप में ज्वाइन करेगा, उसके बाद पूछेगा बात किसका चल रहा था एक्चुअली में। पूरा टी ले लिया, उसके बाद मैटर ही नहीं पता कि हुआ क्या। For 5 mark question, the word limit is 100 to 150 word. Ideally, 3/4 of the page is required. ठीक है, एक पेज का 3/4 portion. And for a 10 mark answer, the word limit is 200 to 250 words. Ideally, one page and second page का 1/4 तक में complete हो जाना चाहिए, या एक पेज में भी complete हो जाएगा, depending upon your handwriting कि आप कितना words लिखते हो एक लाइन में। ठीक है, अच्छा चलो, बिफोर आई लीव मैं आपको एक और कुछ दिखा देना चाहता हूँ। बहुत लोग मेरे को पूछ रहे हैं ना आंसर कैसे लिखते हैं, यहाँ के बच्चों को कैसे सिखाया जाता है। देखो भाई, जो लोग सैंपल पेपर लिए उनके लिए भी ये डाला गया है। अब मैं सैंपल पेपर तो नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो मेरा घाटा हो जाएगा। हाँ, बट मैं आपको एक आंसर की जरूर दिखा देता हूँ, हालांकि मुझे करना नहीं चाहिए। जिन बच्चों ने सैंपल पेपर लिया वो लोग मेरे को गाली देंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोजिटली इंडिगो से लेके अनिरुद्धा का एक क्वेश्चन डाला। ठीक है, अनिरुद्धा बोस का ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप सैंपल पेपर ले लो चाहिए तो, नहीं लिया तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, सो अनिरुद्धा बोस ट्रांसफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी आंसर्स तो दिए हुए बना के अपने, बट एट द सेम टाइम उसको ब्रेक डाउन करके भी दिया है कि क्या की पॉइंट्स डालने हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स है जो आने हैं, कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस। अब क्या, अब नाउ यू डोंट हैव टू मेक यूज ऑफ ऑल दीज, even if you make use of at least 5 or 6 of them, it automatically elevates the standard of your answer. However, the key points are to be touched upon. Key points are to be touched upon. At the same time, मैंने सैंपल पेपर में उनको ये भी बताया कि हाउ टू राइट इट। जैसे आपका आंसर का फ्लो कैसे बैठेगा, ये जो चीज आप देख रहे हो, दिस इज फॉर द फ्लो। तो हम लोग यहाँ आर्यन ट्यूटोरियल में क्या करते हैं ना, हम लोग बच्चा लोग को पहले ही बोल देते हैं कि आप बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग योर आंसर, आप एक छोटा सा माइंड मैप, ये सॉर्ट ऑफ माइंड मैप हो गया कि आप ये फ्लो लिख लो आंसर लिखने से पहले कि क्या क्या आएगा। बिफोर एंड आफ्टर का कॉन्ट्रास्ट देना है, उसके बाद एक स्ट्रक्चर का शिफ्ट आना है, फिर डायरी का फंक्शन क्या है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या हुआ अनिरुद्धा के कॉन्टेक्स्ट में, एंड एंड विद द थीम दैट इज हिस्ट्री हॉन्ट्स आइडेंटिटी। तो उनको ये यहाँ पे सिखाया जाता है या बताया जाता है कि ये लिखना है, फिर इसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, तो ऑटोमेटिकली वो रिदमिक फ्लो जो आना चाहिए ना आंसर का, वो बन जाता है। उसके बाद उनको ऑलरेडी कीवर्ड्स मैंने दे दिए हैं, कीवर्ड्स एंड की फ्रेजेस जो यूज करना है, की पॉइंट्स बता दिया है कि वो लोग क्या डाल सकता है, ऑटोमेटिकली उनका फ्लो ऑफ थॉट्स आ जाता है। एंड यहाँ के बच्चों का पेपर आइडियली समवेयर 2 घंटा 2 hours 15 मिनट्स के अंदर अंदर, 15-20 मिनट्स एट द मैक्स 30 मिनट्स में वो लोग कंप्लीट कर लेता है। दैट इज हाउ वी प्रिपेयर देम। ठीक है, yeah, even if you are thinking of doing my sample papers tomorrow, it is a very good decision, but before you start with the sample paper, कोशिश करिएगा दोपहर तक जितना भी रिवीजन करने का है, पढ़ने वढ़ने का चीज है, सब आप रैप अप कर दीजिए। उसके बाद आप आराम से इवनिंग, मतलब पोस्ट लंच आप सैंपल पेपर लेके बैठो, उन 5 सैंपल पेपर में अपना दिमाग फोड़ो, हो जाएगा। ठीक है, चलो, सो आई टेक योर लीव, गुड नाइट। सर आपका सैंपल पेपर लीक है, तुम लीक तो करो, फिर देखो हम क्या करता है। क्या बोलते हो, 4 मुल्के की पुलिस भिजवाऊंगा मैं। Sir, I want you to be my Valentine for Valentine's Day. No, I don't want to be your Valentine. Like, I don't want you as my Valentine. पढ़ाई कर लो bro. You should always rise above petty consideration. Now go and decode के मैंने क्या बोला English में. You should always rise above petty consideration. And rather for you, I would say, not my circus, not my monkey. Bye bye. Signing off for tonight.
चलो बाय बाय.